Assalamualaikum everyone. My name is Mahnoor Fatima Khan. I am from the Department of Electrical Engineering, second semester from University of Southern Punjab, Multan. My name is Syed Mujtaba Shamsi. I am the student of Electrical Engineering of 8th semester from University of Southern Punjab. आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है, क्या एप्लीकेशन है, और इसी के साथ साथ हम मौजूद हैं अपनी पावर लैब के अंदर, जिसमें हमारे साथ हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर मौजूद हैं सर सोहेब साहब। आज हम इनसे पूछेंगे कि हमारी इस लैब में स्टूडेंट्स की क्या एक्टिविटीज़ है और हमारे पास क्या क्या ऑपरेटर्स है और किस तरह हम यहाँ पर प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हो? अच्छा सर, क्योंकि हम मौजूद हैं हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, तो सर और ये पावर लैब है, तो इसके साथ साथ हमें बताएं सर पावर लैब में क्या एक्टिविटीज़ हैं सर स्टूडेंट्स की, क्या होता है ये, और सर इसी के साथ बताएं कि इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम जो है सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें सर कौन कौन से लैब्स हमारे पास अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी में? आई एम इंजीनियर सोहेब अहमद। इलेक्ट्रिकल पावर लैब के अंदर जो है ना, वो मेनली हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम एक्चुअली कंप्राइज करता है 3 to 4 डिफरेंट पार्ट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पार्ट जहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन सिस्टम्स। देन हमारे पास इस पावर को हम स्टेप अप करते हैं, इसके वोल्टेजेस बढ़ाते हैं और ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस इसको ट्रैवल करवाते हैं। तो वो पार्ट जो इस पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम्स, ठीक है। सेकंड लैब इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम्स की है। देन हमारे पास हम इस पावर को डिलीवर करते हैं होम्स में, इंडस्ट्रीज़ में और डिफरेंट सेक्शंस में, डिफरेंट लोड्स में। तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन पार्ट, ठीक है। तो हमारे पास ये सारी लैब्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के जो इक्विपमेंट हैं वो बहुत कॉस्टली और बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत होती है, और हमने पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी के लिए भी प्रोटेक्शन स्कीम्स भी जो है वो डिज़ाइन की हुई होती हैं। तो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन इज़ अनदर फील्ड, उसकी लैब भी हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर लैब के अंदर मौजूद है। इसके साथ सर हमारी लैब्स कौन कौन सी यहाँ पर अवेलेबल हैं? हमारे पास लैब्स में सबसे पहले आ जाती है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन लैब, ठीक है। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लैब भी मौजूद है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल पावर प्रोटेक्शन सिस्टम्स की लैब भी मौजूद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारी सेकंड होस्ट करेंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप हमें ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन से रिलेटेड यहाँ पे कैसी और क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में एक्चुअली पहले तो समझने की ये चीज़ है कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में हमारे पास डिफरेंट टाइप के पावर जनरेशन प्लांट्स होते हैं, ठीक है। कुछ पावर प्लांट्स हैं जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक से बिजली बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सोलर से पावर जनरेशन होती है, थर्मल पावर स्टेशन हैं, डिफरेंट टाइप के पावर जनरेशन वो होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो एक मोस्ट कॉमन चीज़ है तमाम उसके अंदर, वो ये है कि जनरेटर सेट्स होते हैं, ठीक है। जनरेटर्स हैं, तरबेला डैम देखें, मंगला डैम देखें पाकिस्तान के, तो हर जगह जनरेटर है। उन जनरेटर्स ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करनी होती है। तो हमारे पास इस लैब के अंदर जो मेन इक्विपमेंट अवेलेबल है, बिसाइड्स सोलर पावर और थर्मल के अलावा जो हमारे पास मेन इक्विपमेंट अवेलेबल है वो इलेक्ट्रिकल जनरेटर सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स जो है उसको हम रन करते हैं, और स्टूडेंट उसके पैरामीटर्स चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर जो जनरेट हो रही है उसकी किस वोल्टेज के ऊपर वो जनरेट हो रही है, और उसके वोल्टेज कैसे स्टेबल रखने हैं। लोड्स जब आते हैं इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन सिस्टम्स के ऊपर, तो उन लोड का क्या इफेक्ट होता है ओवरऑल इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के ऊपर, इसका इक्विपमेंट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। और इस वक्त स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ मेरे बैकग्राउंड में मेरा ख्याल है इलेक्ट्रिकल पावर का ही जनरेशन का ही एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो सर आप न्यू आने वाले स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का क्या स्कोप है इंटरनेशनली? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है ना वो बड़ी मेन फील्ड है। आपको पता है सारी इंडस्ट्री और होम अप्लाइंसेस और जितना भी कुछ हमारे पास बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप बहुत अच्छा है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर इनोवेशंस जो है वो डेली मॉडर्न उसमें आती रहती हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं, पहले हम कन्वेंशनल पावर जनरेशन उस पे थे, पावर जनरेट करते थे, फिर हमारे पास सोलर आ गया, सोलर के अलावा थर्मल थे। तो इवॉल्व कर रही है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद टाइम, और जैसे जैसे ये इवॉल्व कर रही है उसी तरह हमारे पास न्यू जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं। अब पहले जो है वो पेट्रो इंजन्स होते थे, अब जो है वो जो व्हीकल्स आ रही हैं वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं। उसके अंदर जो बैटरीज यूज़ हो रही हैं, लिथियम बैटरीज हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड से ही बन के आएगी। तो इसी तरह डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ बैटरीज की फील्ड में, पावर जनरेशन की फील्ड में, ट्रांसमिशन की फील्ड में जो है वो इमर्ज होती रहती हैं, और इसका बहुत अच्छा स्कोप है। नए आने वाले स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना मेरा ख्याल है हाईली रिकमेंडेड है।
ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम। आपने हमारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो अब हम अपने नए फैकल्टी मेंबर को दावत देंगे, वो हमारे साथ आएँ और इस शो को कंटिन्यू करें। इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे गेस्ट का। नाउ हम अपने शो को कंटिन्यू करते हैं हमारे सेकंड गेस्ट के साथ, जिनका नाम है इंजीनियर मुनीब खान साहब, जो कि इस लैब के इंचार्ज भी हैं और पिछले 10 साल से इस लैब को करवा रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो सर अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि सर हमारी इस लैब में जनरेशन को लेकर सर किन किन पैरामीटर्स से हम ये जनरेशन कर रहे हैं और हमारे पास क्या इंस्ट्रूमेंट है उनके हवाले से? अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द थिंग्स इन पावर सिस्टम दैट power generated from multiple sources like water, solar, hydro and other different things. So we generate power from different sources, convert energy into electrical useful energy. So that's why you said about the parameters that are available in this lab. We have a generating station. Behind me is there, students are working over there and they are calculating different parameters of current, voltage and synchronization system of different units. Another main portion of power system is about power transmission. Like we generate power from different sources as I discussed earlier with you. After that we have to transmit power from one end to another end. Like we generate power on the power station like Tarbela power plant and Mangla power plant. These are the vast hydro resources of Pakistan. So replicate system of these here in this lab is the generating station. We have generating module over here that coupled with the turbine and the motor, and we generate power on this system, and students practice here, calculate different parameters and all this stuff to learn about the power generation. After that, main important parameter of power generation is power transmission. We have to receive power to the city centers. Like we generate power very far from areas of our country, and after that we need to get power or take power from in the city centers or load centers of different cities. So that's why we designed transmission lines. You know, in Pakistan 500 kV transmission lines are already installed in our system that transmit power from one end to another end. But here in this lab, we guide students to design transmission line in pi model, in T model, and different stuff is already there. Student learn about that, student practice there about and design the transmission lines. After that transmission system, there is a distribution system. So we know there are different 500 kV transmission lines in the country. After that these power we transmit to the grid stations of the 500 kV grid stations. We can say that after that these transmission system transmission grid station, there is a distribution grid station of 132 kV. So we have to distribute our power to our consumers, our end users like domestic users, like industrial users, and the other users, mills and different stores up to see you can say domestic users. So that's power generate very far from first of all generating station, then transmission, then distribution system, and then the at the end user. So all this system is designed in this lab. Different subjects offer here in this lab. One of all very first subject is power generation, another subject is power transmission, third subject is power distribution. Students learn about the power generation, power transmission and power distribution system in different subjects, and with the lab 3-hour lab here, students practice very well about the experiments of power generation, power transmission and power distribution and utilization system. And the one of the most important parameter of the power system is power protection. You can say power protection, in which they can calculate different faults of the power system, different and achieve the power system quality of our power system. So all these major components that I described earlier with you is about power generation, transmission, distribution and
power system protection. All these calculated, all these experiments, setup and equipments are available, and state of the art facilities here for the students to calculate, learn and achieve and research about more and more things about the power system. Thank you so much for this huge explanation, sir. Thank you. सर इसके साथ साथ आप हमें ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आज के प्रेजेंट में क्या स्कोप है, लाइक स्टूडेंट्स को क्यों टेक्निकल फील्ड्स को चूज़ करना चाहिए 4 ईयर डिग्री के लिए? First of all, thank you very much for this interesting question. That is the need of the time, and in this modern era, you know, we cannot live without electricity for 1 second. Our mobile phone switch off, and our all necessity basic things are work on the power system. So without electricity, I can't imagine life. So that's why electricity is very important, and the power generation. So that's why if electricity is important, then power generation is need of the time. And all these subjects like power generation, transmission, distribution and power system protection are one of the major subjects and the major component of the BSc Electrical Engineering program here in University of Southern Punjab Multan. So that's why these subjects are very important, and this is the need of the time. And in the future forecast, you can say we upgraded our system with the artificial intelligence and its control to the automatic control of the system. So that's why GIS grid stations are introduced in the electrical degree programs. So our curriculum is updated, and that is linked with the need of the time and with the future forecast system. So that's why these subjects are important. Without electricity and solar system design, you know, nowadays solar system is you know very in our community. So that's why this is also one of the major part of the power system, solar power generation, wind power generation and different renewable energy sources that are also designed in this lab. We work on different simulation softwares also, like PVC software for the design and installation of our solar system, and the another SCAP software is also there for the design of the multi-layers solar cell that is important for the solar power generation. So in the need of the time, or you can say in the future scope of this program or this degree is very huge, and I think this is important and need of the time. Thank you so much, sir, for such an informative talk. As a student, every day made me realize that choosing University of Southern Punjab for my 4-year bachelor's degree was the bestest decision of my life. इसके साथ साथ हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।